Shahid, on the mark. On the mark. यार तुम मेरा पीछा कर रही हो? तुम स्टॉक कर दी? अरेस्ट हो? But शायद जहाँ देखो वहाँ क्वीन और हैदर का ही नाम है. How proud do you feel at the moment coming to 60th? जी बहुत कूल फील हो रहा है बिकॉज एक्चुअली विकास, मैं, आलिया, अभी हम लोगों ने शानदार की शूटिंग ख़त्म की है और वी कीप बम्पिंग इनटू ईच अदर द अवार्ड्स एंड इट फील्स सो नाइस टू सी दैट पीपल दैट यू हैव डन अ फिल्म विद आर बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर देयर वर्क. ऑनेस्टली जब हम लोगों ने शानदार की शूटिंग शुरू की थी तो उसको कहीं से भी बड़ी फिल्म नहीं माना जा रहा था बिकॉज तब तक क्वीन रिलीज़ नहीं हुई थी, हैदर भी रिलीज़ नहीं हुई थी, आलिया की भी आई थिंक 3 फिल्में इस साल आई हैं जो बहुत पसंद की गई हैं. So it's really amazing that things have been so good for all of us this year, and we hope that will help people like Shandar and come and watch it more. And it just feels very, very nice to see people that you've worked with and you've really had a good time working with go up on stage and be awarded and be rewarded and be appreciated. But एक एक्टर और एक एक्ट्रेस पूरे साल मेहनत करते क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर वो ब्लैक लेडी घर ले पाए, तो आपने गए साल मेहनत तो करी हैदर से. यार मैंने आज तक कभी अवार्ड्स के लिए मेहनत नहीं की. आई हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट दैट. आई एम हियर एट द नॉमिनेशंस एंड आई फील वेरी स्पेशल टू बी नॉमिनेटेड. But I think that you cannot work towards wanting to win an award. The only thing that I work towards is the love of the people, you know. And I really feel that I have been supported by people who have liked my work when I've done some really crap films. And they've always walked out saying, yeah, the film wasn't good, but we like Shahid. And that's very, very kind of them to do that. So really for me, that's most important. Shahid, like you said, Shandar wasn't meant to be a huge film, but now everyone's talking about it. Yes. Is there a lot of pressure talking as well after Heather, after Alia's couple of successes, you know? Is there a little bit of a pressure on the team? I mean, I've been doing this for 11 years, so I'm used to pressure. I actually look at it very positively because I think it's very good for the film. And there's no other way that one should see it. And I think we're working with great people. The team is fantastic. We have a really good set of technicians. We have a fantastic director who's had a great year. We have a heroine who's having an amazing year as well. It's been a nice year for me. So it's great to work with such people. Shahid, also, you keep posting on your Instagram. I have to ask you, your new house is getting ready to be made. Like, how are you fronting that, and by when are you looking to move in? You know, the thing with the house is, whenever you feel it's ready, you realize it's not ready. So I'm just hoping it gets done soon and I shift in soon. But I'm also feeling a bit weird because I'll be moving away from family. I stay very close to my father. He stays just 1 floor below and I stay 1 floor above. So I'm feeling a bit weird about the fact that I'll be on my own and a little away from family. So I might just delay shifting into the house. But yeah, work is on and hopefully it should be ready soon. But Shahid, is it true that you are getting engaged also? Because there are people saying that you're going to get engaged soon. मैंने देख पिछली बार भी हाथ दिखा दिया था. इस बार भी देख लो. No, I'm not getting engaged. Besides Heather, which movie pick would you like to take? Sorry? Besides Heather, besides your film, which other movie would you consider the best? Which I liked this year. I really liked Queen. I don't know. Yeah, so Queen I thought was really शायद good. ये शेप या हेयर स्टाइल कोई नए प्रोजेक्ट के लिए है या फिर जस्ट फॉर द रेड Right now I'm unemployed again. I don't start shooting till March, so this is my figuring out what I want to look like in my next movie kind of look. बाल मेरे पीछे जेल हो जाते हैं, जो शानदार में हो रहे थे तो वो कंटिन्यू हो रहा है. So this is just somewhere in the middle. It's not a look for any film. Also, रिपब्लिक you're डे. working on the house for the next one. This is my look for working on the house. Trust me, I don't go like this for the house, but yeah. रिपब्लिक डे इज ऑन फ्लो 3 days to go. Only the wishes for the people. Wishing everybody a very, very happy Republic Day. It's always fun watching the parade. It's amazing to be a part of a democracy like India. And yeah, hoping for better times, a better year, and a lot of happiness to everybody. Shahid, also, World Cup is right around the corner. You'll be supporting Team India. Which player? No, why will I support India? Yeah, it's going to be a difficult World Cup. It's difficult conditions. We're not going through the best form, but we have an amazing set of players. And usually India does very well when they start off badly. I've always seen that जब भी ऐसा लगता है लोगों को कुछ नहीं होने वाला है तो कुछ अच्छा हो जाता है. So they've not been having the most amazing series, but sometimes they rise up to the occasion really, really well. And they definitely have the players to do so. So I'm fully rooting for India. And yeah, I'm a big cricket buff, so I'm totally rooting for India. Only the post for the camera we are done. Thank you so much. Thank you.
This is the camera. Yeah. How excited are you for the 60th Filmfare Awards? I'm very excited. It's my first award ceremony that I'm attending, and it's the pre-awards night, so I'm really looking towards having some fun. लेकिन हर एक एक्टर और एक एक्ट्रेस का सपना होता है कि पूरे साल मेहनत करें और एट द एंड ऑफ द ईयर वो अवार्ड घर लेके जाए। तो आप ये साल क्या करने वाले हो फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? जी बिल्कुल, मैं दुआ कर रही हूँ कि मेरा नॉमिनेशन निकले। डेब्यू का नॉमिनेशन नहीं निकला है, और हर एक्टर की तो ऑफकोर्स ये ड्रीम होती है कि फिल्म फेयर कभी ना कभी तो जीते। But experts say that Filmfare is the only award that is honest at the moment today. Do you agree with it? Well, yeah, I mean all awards are honest, aren't they? Perfect. So what's next? Any lined up project would you like to share with the viewers and fans? There's something that's happening at Mr. Bhansali's production house, and that's rolling I think in March. So let's see. तो अंदर आप क्या धमाल करने वाले हो आज वो भी बता दीजिए, अगर किसी की मैं देखती हूँ क्या होता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स अंदर है, तो जाके धमाल करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। 26 January is on floor next 2 days. Any song would you like to dedicate to the viewers and fans? Patriotic song? My favorite patriotic song is A.R. Rahman's Vande Mataram. 2 lines if you don't mind. 2 lines. One? नहीं, मैं गा For a नहीं country, I don't know, I can't sing. only the wishes, that's it. Sorry? Wishes for the people. Vande Mataram. Wishes, can you share? Wishes. Okay, wishing you a very, very happy Republic Day. We are proud to be Indians. Thank you so much. Thank you. How excited are you for the function? It's the 60th year of Filmfare. दिस इज़ प्रॉब्ली मैं बहुत कम आती हूँ ऐसे फंक्शंस में, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है म्यूज़िक में कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन इट्स लवली टू बी एक्नॉलेज्ड। और जो गाना है नैना, वो बहुत ही अमेजिंग कंपोज़र जो अमाल मलिक हैं, ही इज़ अ 23-year-old बॉय। मुझे लगता है कि इट्स माई लक दैट आई एम गेटिंग टू वर्क विद अ लॉट ऑफ न्यू पीपल। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स सेलिब्रेटिंग टैलेंट एंड सेलिब्रेटिंग फिल्म एंड सिनेमा। आपके ब्लैक लेडी कितनी इम्पोर्टेंट है? मैं तो बिल्कुल आई डन एन ओड टू द ब्लैक लेडी, माई वर्जन ऑफ द ब्लैक लेडी। तो मेरे ख्याल से मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, और मुझे लगता है ये सबसे पुराना अवार्ड्स है और बहुत मायने रखता है पूरे देश के लिए। इट्स बीन क्रेडिबल क्योंकि बहुत सालों से है, और इट इज़ द 60th ईयर, दैट इज़ नथिंग टू अंडर एस्टिमेट। पूरे अगर वर्ल्ड में ग्लोबली देखा जाए कि बहुत ऐसे कम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक ऐसे लगातार परंपरा रहा हो। आई थिंक फिल्मफेयर अवार्ड्स प्लेज अ बिग रोल। At the end of the day, do you agree that this is the only award function that is honest toward the vision that they have in place? यू नो आई एम नो वन टू, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं तो आई हूँ यहाँ पे सेलिब्रेट करने सिनेमा को, म्यूज़िक इन सिनेमा, क्योंकि मुझे लगता है म्यूज़िक हमारे सिनेमा में बहुत मायने रखता है, और पूरे देश में ऐसे एक इंडस्ट्री है जहाँ पे म्यूज़िक इतना बड़ा रोल प्ले करता है। तो आई कम एज अ म्यूजिशियन, आई कम टू सेलिब्रेट गुड वाइब्स।